कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। जी आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। It is definitely a race against time, but what you saw right now on your screens is nothing short of a miracle. 200 hours after getting trapped in a tunnel at Silkyara in Uttarkashi, the first contact was made with 41 men who have been trapped in the tunnel and for whom an extensive rescue operation has been carried out. It's been 10 days since that tunnel collapsed and the rescue operations are on now in full swing. For the first time, visual contact was established with those 41 workers. The trapped men are also now receiving food at regular intervals, including khichdi, dry fruits, water. Doctors are also in regular touch with these men to keep a track of their mental health. They've been provided with antidepressants and other medicines. The rescue officials today took a head count of the trapped workers after the first visual contact was established. Now imagine their families who for the last 10 days have only been able to sporadically hear their voice. Imagine for the first time seeing their faces with their own eyes. Watch. ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा है। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सबा आगे आगे कीजिए आपके केजी केबिल को। हाँ सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को जितने भागना अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। There are multiple teams and multiple agencies, remember, who are engaged in this entire effort that is being supervised minute to minute by the Prime Minister's office. Already, the Prime Minister has had 2 phone conversations with the Chief Minister. Men from his office have been deployed at the spot, including ministers like V.K. Singh, Nitin Gadkari, who as it is have been supervising. Now, the state-of-the-art equipment has been used to create vertical shafts and horizontal tunnels, which are inching closer to the trapped comrades. As we speak, 5 different escape plans are being worked on simultaneously and 5 separate tunnels are being built to reach and rescue the trapped workers. Times Now, in fact, has been getting you every minute of how the operation progresses and what are the problems therein. Here's what we found. 700 mm का पाइप है, ये सबसे छोटा पाइप 700 mm का है। और देखिए मैं इसमें से पार होके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उन लोगों को आने में यहां दिक्कत होगी या बिल्कुल आसानी से आ सकते। देखिए मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच है और मैं देखिए कितने आराम से यहां ऐसे करते हुए आ रहा हूं, रोल करते हुए मैं आ गया। ये 700 mm का पाइप है। जो अभी तक वहां जो पाइप भेजे गए थे वो पाइप 900 mm के थे। और देखिए ये जो पाइप में से मैं निकल के आ गया, ये 700 mm में और 900 mm में पहले 800 mm की ड्रिल की जा रही है, यानी उसे वेल्डिंग करके जो लगाया जा रहा है उसे 800 mm का, 800 में 700 mm का। तो बरखा ये अपने आप में बिल्कुल बेहद जो सूझबूझ है ये तब आई जब पीएमओ की टीम यहाँ पे पहुंची और तब ये दिमाग लगाने शुरू हुए कि भाई अभी तक तो ये जोड़ रहे थे 900 जोड़ रहे थे, उसके ऊपर ये वेल्डिंग करने में टाइम लगा रहे थे। उसकी जो स्ट्रेंथ थी, देखिए जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ को मजबूती देने के लिए अब इन लोगों ने, जो इनके वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने कहा भाई 900 में 800 कर दो, 800 में 700 कर दीजिए। My colleague Barkha has been there on the spot last 1 week. Barkha, ये बताइए, it's fascinating, ये जो आपने पाइप से पूरा
एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इस पाइप को कैसे डाला जाएगा, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि सबके दिमाग में यही उत्सुकता है कि जब हमारे जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे। आपने इतने लोगों से बात की है अभी तक, वो जो आखिरी मोमेंट्स होंगे वो कैसे उनको पॉसिबल किया जाएगा, ये समझाइए। ये जो आखिरी मोमेंट्स की आप बात कर रही हैं, देखिए वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब ये पांचों प्लान्स जिन पर काम किया जा रहा है पद्मजा, उनमें से कोई एक भी जो है वो वक्त रहते सक्सेसफुल हो जाए। जिस पाइप की आप यहाँ पर बात कर रही थी, जिक्र कर रहे थे, वो पाइप जो है देखिए वो हॉरिजॉन्टली जो अमेरिकन ऑगर मशीन लगातार ड्रिलिंग टनल के अंदर कर रही है उसके थ्रू अंदर पुश किए जाने हैं। मेरे सहयोगी बिलाल आपको तस्वीरें भी पद्मजा इसी बीच में यहाँ पर दिखा देंगे किस तरह से अभी शुरुआत यहाँ पर की गई है कि 900 mm के पाइप जो है वो शुरू किए गए थे, उनको अंदर ऑगर मशीन के इस्तेमाल से ड्रिल किया गया। उसके बाद जब वो 22 मीटर तक पहुंच गया, 22 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आगे परेशानियां थी क्योंकि आगे कुछ मशीनरी थी, पत्थर थे, वहां पर वो मशीन जो है वो काम करना बंद कर देती है। अभी फिलहाल देखिए काफी वक्त से ऑगर मशीन जो है वो बंद की गई थी। उसके बाद मैनुअली उस 900 mm के पाइप के अंदर दाखिल होकर दो लोगों ने यहाँ पर उस पूरे पत्थर को ड्रिल किया है, हटाया है, ताकि आगे का काम शुरू हो सके। क्योंकि आगे का काम तभी शुरू होगा जब बाकी के पाइप जो है उन्हें अंदर इस रबल के अंदर पुश किया जा सकेगा। और वो इसीलिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि जो पत्थर, जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं वो रोक रहा था उसको। इसी वजह से वो पाइप्स जो है वो टूट रहे थे, ये काम पूरी तरह से हो नहीं पा रहा था। अभी भी इसीलिए देखिए सिर्फ 22 मीटर तक ही ये पूरा का पूरा सफर जो है वो यहाँ इन मजदूरों तक पहुंचने का तय किया जा सका है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो रहा वो सेफ्टी पाइपलाइन जो वहां तक पहुंची है 6 इंचेस की, जिसके थ्रू उनको खाना जो है वो पहुंचाया जा सकेगा। आज कुछ फल पहुंचाए गए हैं। जैसे ही वो तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आई थी कि मजदूर खुश थे, उनसे जब बातचीत की गई थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये चेंज की फूड सेफ्टी पाइपलाइन पहुंच गई है तो ऑगर मशीन से जो वो पाइप्स ड्रिल किए जा रहे हैं जिनके थ्रू वो क्रॉल कर बाहर आ जाएंगे, वो भी वहां पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि करीब 60 मीटर की ये पूरी दूरी है मजदूरों तक, लेकिन अब पता चला है कि ये दूरी 53 मीटर है। अगर 22 पूरी हो चुकी है तो 30 मीटर से ज्यादा का ही ये सफर बचा है। और अगर ये बहुत जल्दी कर लिया जाता है तो आप मान लीजिए हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में शायद ये जो लोग हमारे अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकें। Very, very important information being given there by Barkha. I'll just come back to you, Barkha, in a second. Because the 5 options which are being worked on simultaneously, it is very important to understand them. What exactly is being worked upon right now? What is each escape plan? Plan number 1, horizontal boring is being done from the Silkyara end. Silkyara is the place from where these laborers had entered the tunnel. Remember, the place where they are at right now is a 2-kilometer stretch of the constructed tunnel. So, touch wood, there is no problem there. It has power. The walls are stable, but they have got debris on this side, on the Silkyara side, which is blocking their exit. So, the boring is underway using a US auger machine from the Silkyara side. That is escape plan number 1. 22 meters, like Barkha just said, has already been drilled, which means, in fact, the update is about 30 meters already been drilled. So about 23 meters is left now. So they are going every day little by little closer to these men from the Silkyara side. Now escape plan 2 is 1.2 meter wide hole is being dug vertically. So one, they are going from this side, horizontally from the Silkyara side. Another hole simultaneously is being dug from above. The fascinating thing is that the machines which needed to be taken up the hill for this digging process, they needed a pakka track, and this road was built by the BRO in 24 hours. In the span of one day, the BRO constructed an entire road on the hillside for the machines to be taken up. You have to remember, these are massive machines. It's a hill face, so for them to be taken up needs quite a proper road. It was done in 24 hours. Dug at 320 meters mark from the Silkyara side. So if you've got this here base at the Silkyara side, 322 meters up from there, a vertical tunnel is going to be dug. And escape plan 3 is a horizontal micro drilling from left of the tunnel, from the other side. So if I'm here, they are going in from this side, they are coming in from the other side as well. You've got a 1.2 meter wide, 168 meter tunnel being dug from the left side
as well. So from both sides and from top, you've got the 3 different tunnels which are being dug. Escape plan 3, that is, it meets the tunnel at the 300-meter mark from Silkyara. So you've got one tunnel being dug from here, another one being dug from here, third being dug from the top. Escape plan 4, work underway on tunnel from the Barcoat end as well. Now, this conventional drill and blast method is what is being used from the Barcoat end. So that is escape plan 4, and the THDC is to dig around 483 meters to reach the workers. And finally, we have escape plan 5, which is at work over here, which is that the ONGC has been asked to construct a vertical tunnel. So another vertical tunnel, this one is being dug by the ONGC, and this vertical tunnel is to be built at a 2.3 kilometer mark, around 325 meter tunnel to be constructed. So all 5 options, all are being worked on simultaneously because time is the essence. And speaking of time, बरखा, शाम के 6:15 हो चुके हैं, उत्तरकाशी में खासी सर्दी इस वक्त हो रही होगी, क्या ये काम रात भर चलता है? जी जी, काम जो है देखिए, कोशिश यहाँ पर यही की जाती है कि 24/7 जो है वो ये काम जो है वो जारी रहे। कुछ घंटों का गैप जो है देखिए वो बीच में जरूर दिया जाता है क्योंकि वो जरूरी होता है, लेकिन लगातार 24/7 काम इसलिए चल रहा है क्योंकि कोशिश ये है कि पहले से ही 10 दिनों का वक्त जो है वो बीत चुका है, जल्द से जल्द ये लोग जो है वो बाहर आ जाए। आपने देखिए यहाँ पर वो सारे एस्केप प्लान्स का जिक्र यहाँ पर किया है जिनको यहाँ पर अभी एक्शन में लाया गया है, क्योंकि ये अलग अलग रास्ते इसीलिए चुने गए क्योंकि जो भी पहले सबसे सही रास्ता होगा, सबसे जल्दी उन तक पहुंचने का होगा, उन तक पहुंच जाया जाएगा। लेकिन आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है। जब वो वीडियो सामने आया तो हमने देखा कि वहां पर वो रोप के सहारे, रस्सी के सहारे खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर चढ़े भी हुए थे। उनसे यहाँ पर मौजूद ऑफिशियल्स ने सवाल पूछा कि आप क्या कोशिशें वहां पर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी पिछले कई दिनों से ये समझ में आ रहा था कि वो पिछले कई दिनों से वहां से बाहर निकलने के प्रयास अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। उनसे ये जरूर कहा जा रहा था कि हम आपको बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन उन्होंने आस नहीं छोड़ी और अपनी तरफ से हौसला बनाए रखा और अपनी कोशिशों को भी अंदर जारी रखा। You know, no one can underestimate how mammoth this entire exercise is, and anyone who tries and belittle it as, you know, too little too late really has to be divorced from reality. Imagine, Barkha, thank you very much for joining us and good luck to you. This is very, very difficult engagement for you as well. I want to take this across to our guests as well. Sunita Vidyarthi, spokesperson of the BJP in Uttarakhand, Naveen Bhatnagar, former DIG NDRF, Lokesh Jindal, political analyst, Abhinav Thapar, social activist and leader of the Congress. Abhinav Thapar, for राहुल गांधी टुडे टू से कि अरे हर कोई तो बस क्रिकेट दिखा रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है कोई दिखा नहीं रहा है. People are questioning what is the Prime Minister doing, why is he going to watch the match. There are members of the PMO who have been there, ministers who have been there since day one. अब क्या कमी लगी रहेगी इसमें? Ma'am, first I would like to make you understand what the point is. There are two types of failure currently in the Silkyara. I am a native of Tiri. I live in Dehradun. That is my whole valley. That is Ganga Ghati and Yamuna Ghati. Radi Top is the place where Silkyara band is opening up. This is the place which is a diversion between Ganga Ghati and Yamuna Ghati. And Himalaya, as you know, is the youngest mountain in the world. So these are the fragile mountains. First, we need to understand there are two failures. Calamities aati hain, aapda aati hain. That is no big deal. We are here in zone 5, seismic zone 4, seismic zone 5. We are born and brought up over here. So that is our motherland. We are son of soil. But how we are supposed to deal with it, that is more sensitively is our responsibility. There are two types of failure. First is government failure, then is company's failure. Government failure is there was no action on the site for 5-6 days. Now PMO has been involved. It is a national calamity. They have taken it up. Now they are writing it to PMO. So basically, I feel it is a escape route by Chief Minister or state government because they are being failed and now they are involving PMO. This is a state SDRF issue. This is an issue of 5-6 days there was no response by the state government. Sunita Vidyarthi? 5-6 दिनों तक स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. No, hold on a second. Let's be very clear on facts. Today we are on day 10. Sunita Vidyarthi, first 5 days nothing happened. Respond.
Ma'am, I'm coming on facts. I was waiting for Let's examine each fact one by one, sir. We can't have long monologues. Sunita Vidyarthi. लगातार आरोप है क्योंकि डे वन से वहां पे रेस्क्यू प्लान जो है वो वर्क कर रहा है और हर दिन हमने जो है एक नया वहां पे काम किया है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, प्रत्येक एजेंसीज के जितने भी वहां पे साइंटिस्ट लोग हैं, सभी लोगों ने हर दिन जो है एक नई चीज को जो है वहां पे हासिल किया है और हर तरह से वर्कर्स को सेफली बाहर निकालने के लिए अपना प्रयास किया है। और मैं कहूं कि अभी जो हमें बहुत बड़ा एक रिलीफ हमें जो कल से हमें मिल रहा है, जो अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे 5 पॉइंट प्लान, उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम उनको सेफली बाहर निकालने में कामयाब होंगे। और जिस प्रकार से 5 एजेंसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की है, देखिए इट्स नॉट द मैटर ऑफ SDRF। जब ऐसी चीजें होती हैं तो सभी लोगों को हर तरीके से ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे जिंदगियां अंदर हैं, उनको हम सेफली बाहर निकालें। इट्स नॉट द मैटर ऑफ एनी पॉलिटिक्स। और कांग्रेस पार्टी हमेशा देखिए आपदा में अवसर खोजती है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी प्रकार का सुझाव कांग्रेस पार्टी ने कभी दिया। और हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार डे 1 से वहां पे काम कर रही है। हमारे वैज्ञानिक हर दिन जो है हमने एक नई चीज वहां पे जो है वो उन तक पहुंचने के लिए हमने कोशिश की है। Mr. Bhatnagar, because he's been former DIG of NDRF, how would you evaluate the rescue efforts so far, Mr. Bhatnagar? Are they slow? Are they satisfactory? Please tell us from your experience. Yeah, definitely. Yeah, from the day one I am watching all these things and I am giving the program on different channels on this subject. And I know better, I am not a political man, I am an independent man and I am retired now. So I am not the man to compromise with any of the political party. Even then I will request from all the political party, don't make it an issue. Please don't make it an issue and don't compel we people to make hindrance in our rescue operations. So we are doing our rescue operation in a right manner and whatever machineries were required, which was not there with the state government, so it was procured from the other places also, even the US, and experts also were called. So within no time. So our honorable PM Shri Narendra Modi ji keeping continuous watch on this thing. So I'll say very boldly that don't make it a political issue. Our efforts are going on in the right direction and we are in the hope to very soon we will achieve our target. We can save the 41 people shortly. Okay. And you will see that good amount of this thing we will achieve it. Okay. So, respond to this, Lokesh Jindal. Lokesh Jindal, by the way, I don't know if you know this, but machinery for vertical boring was mobilized from the US, from Mumbai, from Ghaziabad. Initially, the ones that were brought in, the machines that were brought in from Gujarat and Odisha through road, they had a problem because you have a different kind of stone there. Despite that, the effort has not stopped. And now there is hair splitting about why didn't it happen sooner? What are you supposed to do? Fly like, fly on a magic carpet to the US and lift a machine and get it within 2 hours? Look, Padmaja, right now, we all Indians, they stand for the 40 laborers who are stuck into the tunnel. And we are hoping that they all are safe and sound. However, 2 important issues, as my dear friend said, they need to be highlighted. First of all, the companies who engage into such form of construction activity, they are required to have some form of safety mechanism, some form of rescue mechanism if a mishap occurs. It becomes an onus upon these companies to ensure that the lives of the laborers are safe and secure if at all there is some form of a incident like this that happens. Secondly, do NDRF or is NDRF having tunnel rescue operation experts today? No, it doesn't have. If you look at the entire last 10 days, on 13th of November, NDRF claimed that by evening they shall get all the laborers. By the way, you know that it's not just NDRF, it is 5 agencies, including
Oil and Natural Gas Corporation, Satluj Jal Vidyut Nigam, Rail Vikas Nigam Limited, National Highways Infrastructure Development Corporation, Tehri Hydro Development Corporation, who have a specialization in tunnels, and NDRF, who are responsible for this entire operation. 15th of November, the NDRF claimed that by the evening the laborers would be out. But what happened? The entire site is very muddy. Whenever the pipes were inserted inside, it was not going through. Then slowly and steadily, they came up with alternate plans. The idea is, if at all there are tunnels that are being tunnel work that is going on, first of all, safety and security of the workers inside it, it must be taken due care of. Always remember, precaution and prevention is a primary step prior to execution of any task. Wonderful. Everyone has wisdom in hindsight. I don't know if you remember of the multiple terrible tragedies that have happened in mining shafts across Jharkhand, in Chhattisgarh, and scores of lives were lost in that, leave alone talking about lives being saved after 10 days or 11 days. Anyhow, in this, if people choose to do politics, it's entirely their wisdom. The fact is, as a country, all that people are praying for is the safety of these 41 men. Let's have them out as soon as possible. Thanks very much, all gentlemen. Sunita Vidyarthi for joining me.